बहुजनों का एक न्यूज़ चैनल देखेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे उनका क्या मुद्दा चल रहा है, क्या व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, व्हाट दे आर सेलिब्रेटिंग, एनीथिंग कुड बी देयर, राइट? सो लेट्स गो एंड वॉच इट. Go, we're gonna watch some. Yeah, it's called Janta Live. Janta Live has already crossed 3.67 million subscribers. Oh my god. Let's see. I think something is happening. We can watch. एक वीडियो देखते हैं हम लोग. ओके, यहाँ पे कोई बहुत दिख रहा है. लेट्स सी. मुझे हिंदी ओके, वेरी वेरी नाइसली डन. लेट मी रीड आउट द टाइटल फर्स्ट. थाईलैंड के लोग जय भीम और डॉक्टर अंबेडकर पर ऐसा ऐसा क्या बोले कि आप तारीफ करोगे. या ब्रो, लेट्स गो, वी गोना वॉच इट. हम भी तारीफ करेंगे. बहुत ही सही बहुत लगता है अच्छी लगती थाईलैंड में. है। मैं हिंदी में भी बात करना चाहती हूँ. इन महाराष्ट्र देशे नमो बुद्धाय जय भीम. सो आई ऑल्सो लव नमो बुद्धाय जय भीम. बट वी बुद्धिस्ट वी डू रिस्पेक्ट बाबा साहेब very much. People in Thailand know about Baba Sahib. Yes, Ooh, they know about absolutely. Baba Saheb Ambedkar very much because as you know Lord Buddha said. नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव. मैं हूं अफसत रवीना. इस वक्त हम नासिक में मौजूद हैं और बार बार आपको आज अशोक विजयदशमी का महत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नासिक में किस प्रकार से श्रीलंका से बोधि वृक्ष लाया गया है. और ये कार्यक्रम इतना बड़ा है कि इस कार्यक्रम में सिर्फ देश भर से नहीं बल्कि विदेशों से लोग आए हैं. थाईलैंड से एक महिला हमारे साथ हैं, इनसे बातचीट करते हैं. लैंग्वेज बैरियर जरूर आएगा लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बातचीत करवा सके आपकी. हाय, व्हाट्स योर नेम? Okay, this is happening in Nashik. And you are from Thailand. Yes, from So- Bangladesh, but stay in Thailand. Yeah, we want to know, like in India we know about Buddhism, but what do people think about Buddhism in Thailand? Buddhism is, we can say they practice Buddhism in Thailand very fine, but in I would like to invite the most venerable Dr. Ponchai. Yeah. He is the president of World Alliance of Buddhists, so he can explain better and more. Okay, he can explain more. What's your name, sir? My name is Venerable Dr. Ponchai Palawathammo from Thailand. We want to know what do people think about Buddhism in Thailand? Buddhism in Thailand is like the refuge of everyone because Thailand become the Buddhist land for a long time, 700 years, and come from India to Thailand. बोल Right. रहे हैं कि थाईलैंड बुद्धिज्म की एक लैंड बन चुका है, एक धरती बन चुका है और शुरुआत जिस चीज़ की भारत से हुई है अब थाईलैंड उसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहा है. After that, Thailand became Buddhist land until now. All the king of Thailand became Buddhist because we know that the Buddhism bring the happiness. अच्छा, बोल रहे बुद्धिज्म खुशियाँ और शांति लेकर आता है, इसलिए थाईलैंड के सभी लोगों ने बुद्ध को अपना लिया है. क्या See, everybody talks, every religion talks about bringing peace or serenity or, you know, into your life with the religion, right? But no religion like Buddhism can give you this kind of a perspective. Like, if this was like a procession of Ram, then you would have seen a Jai Shri Ram chanting. People were holding swords, creating violence, things like that, maybe, right? So, I mean, there's no sense of, you know, peace or serenity with those kind of religion. But here you can see, you can find it. The visuals are clear, right? Look at it. अच्छा लगता है? What Tell do me you if you- find if you good don't. in Buddhism? What is the best thing of Buddhism? Because the best thing in the Buddhism, because the Buddha taught us about the law of karma. If you do good, you get the good result. If you do bad, you get the bad result. That is very important. जी. And taught us about daily life, what we should do. What we should do is Right. first is dana, sharing. Second is sila, precept. Third one is bhavana, meditation. So that is the most important. जी, तो कह Right. रहे हैं कि बुद्ध की सबसे बढ़िया चीज़ इनको ये लगती है कि बुद्ध ने ही हमें ये सिखाया है कि जो हम करते हैं वैसा ही पाते हैं. अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा. Now I like to ask you a question. You are wearing a sari and that is a perfect attire in India. So why are you wearing a sari? Because in fact I love sari very much, and I bought this sari from Aurangabad, and they said the name of this sari is Paithani, and I look like fall in love with Paithani, and I thought like this time I Wow. am coming in Maharashtra, and I should respect their culture, and so I just Everybody in Thailand knows about India and Buddhism and everything.
Yes, almost all they know Nice. about Buddhism, and they love to come in India because this is the Buddha land. And Right. every year, almost every month, whenever they have time, they come to pay homage. जी, लेट मी एक्सप्लेन इट टू ऑडियंस। दे बोल रहे हैं कि ये जो इन्होंने अटायर रखा है साड़ी का, वो साफ साफ इसलिए है कि भारत की संस्कृति को दर्शाया जा सके। और महाराष्ट्र में आए हैं तो महाराष्ट्र के लोगों को निराश नहीं करना है। और थाईलैंड के जो लोग हैं वो तो लगभग Such a ही proudful बुद्धिज्म को moment अपना for चुके us to हैं। look और at यहाँ this. पर भारत में आके कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आता है। I'd like to ask you about the Because this is called the land of Buddha, bros. This is the land of Buddhas. We are born here. If you cannot respect that, right? So people outside are respecting it so much. That is what Vishwaguru is. What we're looking for outside compliment that we're already getting, right? That this is Vishwaguru. This is Buddhism. tree. You know about it. You know about the importance of it. Yes, Lord Buddha enlightened under the Bodhi tree, and it is very important to pay respect. And after he enlightened, he also pay his respect to Bodhi tree. So it's very important for us, for all the Buddhists, to pay respect to the Bodhi tree as the. Do you know Hindi? Little bit of Hindi. Yes, I you can know speak Hindi. anything in Hindi. I know Hindi. I love Hindi. मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है. मैं हिंदी में भी बात करना चाहती हूँ. Something about Buddhism in Hindi. Last. Yeah. ये इंडिया Let's see. बौद्ध Let's go. धर्म के लिए बेस्ट है. एंड बौद्ध धर्म इंडिया से ही हम इसको पाए हैं. सो इसीलिए इंडिया की सभी भाई बहनों हम ऐसा मानते हैं कि सभी इंडिया से जो है वो बुद्धा की सन एंड डॉटर है धम्मा से. सो आई लव इंडिया. मैं इंडिया को बहुत. And what do you say about Gautam Buddha? Do you know about the slogans we call in India, Namo Buddhaya, like that? Yes, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. In Maharashtra, they say Namo Buddhaya Jai Bhim. Yeah. So I also love Namo Buddhaya Jai Bhim. Yes. So she is from Thailand, लेकिन ये भी जानती हैं कि भारत में किस प्रकार से बुद्धिज्म आगे बढ़ रहा है और भारत से ही बुद्धिज्म थाईलैंड की तरफ गया है. Nice. एक लास्ट Very क्वेश्चन proud आपसे of it. पूछेंगे. आज के दिन अशोक विजयदशमी. Do you know about अशोक Baba Saheb विजयदशमी. who bring Buddhism back into India? This is the okay. सबका वीडियो ये 2 दिन पहले रिलीज हुआ है, बट उसके पहले दशमी में ये हुआ है. तो अशोक विजयदशमी में ये मनाया जा रहा है. सो दैट इज द रियल रीजन जिसके लिए दशमी होता है. नॉट दिस दुर्गा या फिर राम दशमी मना रहा है रावण को जला के. नॉट दिस रीजंस, बिकॉज ये दिस इज द कल्चर ऑफ ओल्ड इंडिया जहाँ पे दिस इज कॉल्ड अशोक विजयदशमी. लुक इन we can find more context into it looking into science journey, but currently if you get this is enough right now. Amazing. Yes, I know about Baba Saheb so many things, but now as we have the time constraint, cannot say. Well, Buddhists will obviously know about Baba Saheb because Baba Saheb was given the title called Bodhisattva. Bodhisattva title दिया गया था उनको by the Sri Lankan Buddhists. So everybody will know about him. He has done so much of work for this Indians, Dalit Indians, OBC Indians. So everybody will know about him because his work talks, not like Gandhi ji. Detail or more about Baba Saheb, but we Buddhists, we do respect Baba Saheb very much. People in Thailand know about Baba Saheb. Yes, they know about Baba Saheb Ambedkar very much because, as you know, Lord Buddha said Buddhism is like how to say, when we are by born Buddhist, this is another thing because we born in a Buddhist family, but who convert themselves after knowing the value of Buddhism is more appreciated for every Buddhist because it's come from the rationality, right? Not Right. like only I born in a Buddhist family, so I am Buddhist, but when I know about the Buddhism and I Awesomely realize said, huh? about the Buddha's teaching and the value of life and reality, what is the reality. So, and after that, when I accept Buddhism or convert myself and
consider myself as a Buddhist, this means that I am the real Buddhist. And Baba Saheb did it, so we very respect him. थैंक यू वेरी मच। तो Very एक nice लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था इनसे वो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में था कि क्या थाईलैंड को लोगों को पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने आज ही के दिन अशोक विजयदशमी के दिन 1956 में इतने सारे लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी। उनके जवाब में इनका कहना है कि ये चीजें हैं कि जो बुद्ध होते हैं जन्म से ही, जो पहले से ही बुद्ध है वो Right. This Tewar is called, or this festival was previously known as Ashok Vijayadashami, and also in this day, Baba Saheb Ambedkar took lakhs and lakhs of people and converted them into Buddhism. Lakhs of people into Buddhism in a single go. With this, with his 22 what do you say, 22 pratigya was there, right? So, uske basis pe, or whatever was the basis, he converted them. He was a champ. चीज़ है, लेकिन वो लोग जो बुद्धिज्म को समझने के बाद कन्वर्ट करते हैं, जो इसकी अच्छाइयों को देखने के बाद बौद्ध धर्म में आते हैं, वो अलग तरीके के बुद्ध होते हैं, उनको अलग तरीके की इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो लोग आगे हैं उनसे बातचीत करवाते हैं। शुक्रिया। Nice. Yeah, it's Ravina. Thank you, ji. Thank you. Nice, very nice. Show the crowd, show the crowd. Woo! See? Woo! It's so peaceful, so delightful to watch this. The festivals of Buddhism. I just love them. I just love it. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa.